To begin with our International Conference 2020, I would like to introduce our first speaker, Professor Dr. Syed Mulazim Hussain Bukhari. Working as Professor of Pathology and Head of Department, he is also Director of Postgraduate Medical Education at Azra Naheed Medical College and Superior University, Lahore. He has teaching and diagnostic collaborations with other sections of pathology and experience of 27 years in subspecialties of pathology, that is surgical pathology, hematology, and microbiology. His topic of presentation is Vaccine for COVID, where we are standing. Over to you, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. First of all, I am grateful to the Vice Chancellor, Professor Bushra Mirza, and Professor of Head of the Biotechnology, Professor Shagufta Naz, and always my sister, Professor Farkhanda. Thank you very much for calling. Thank you, Naila, and especially Shah Jahan, Dr. Irfana. You called me, you invited me. It is my opportunity to share the things about the corona and its updates and to give the information what is happening in Pakistan and what should we do in Pakistan and what is happening in the world and what is the hope is this thing. No doubt the corona has created a lot of panic situations, not only in students, not only among teachers, not only in the public, but also there is a big crisis of the economics. Peoples cannot move, peoples cannot, purchasing power has decreased. This was the economically, most of the countries, they almost, they have shut down the relation with each other. So what should we do in this thing? You all know, I would like to share, please allow me to share this thing. Because what is the hope in these situations? And currently, आप देखें तो millions of the peoples have suffered this disease, and more than about 1.7 millions of the peoples have died. ये एक खौफ है, एक उस खौफ की फिजा के अंदर हमने again the second dose is very serious coming इसमें. पहली डोज के अंदर ऐसा था कि जब फर्स्ट वेव आई थी, in the first wave, every person was aware about this. There were SOPs, there were quarantines, and the people were not meeting with each other. But unfortunately, in the second wave, there are marriages, there are malls, there are everything open, and people are meeting with each other, and this is creating a lot of problem. What problem is creating in this situation is that when the people are mixing with each other, पहले तो ये था कि corona एक side पे था, quarantine था. Now the corona has mixed with each other. No, every home, every house, every street, everywhere, you will see a person suffering from this corona. So the first message that I will convey to all the children, all my students, all my daughters of this is that you should apply strictly the SOPs and SOPs and the SOPs unless there is hope of the vaccine. 50% of this war we can win with this SOPs, and the 50% we are waiting, we are looking towards the vaccine. That is still beyond our approach. That will take another 6 months. No doubt it is approaching our doors, it's coming on our door, but still our universities, still our comments, still our is waiting for that, is thinking that. Today I will give you a overview of this vaccine about what is the vaccine, what is the importance of the vaccine, and what is the side effect of vaccine, what are the rumors against the vaccine. I will ask the students to ask the question at the end of this one. Bismillahirrahmanirrahim now. So these are the actually SOPs that can save you. One thing is the mortality rate of this virus is about 1 to 3%. It is not dangerous, but the spreading rate is so high that it can
create a panic situation. So to decrease the panic situation, what is this? That you should wear the mask, you keep the distance, wash your hands, keep your sanitizer in your pocket, and whenever you touch these things, anybody, when you meet anybody, you this one. So this is the message, the beginning message. So this was just a thing that. So what is the vaccine? The vaccine is not a new thing. Vaccines are actually a treatment. Vaccines are actually एक मोडेलिटी है ट्रीटमेंट की कि ये देखा गया कि which virus is going to harm us, जो बीमारी का मूजिब है, what is the causative agent of the virus, उसी वायरस के जरिए से हम इसको ठीक करें. जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है. The things which are, this is the just a common sense of the scientists decided that the which virus is going to infect us, why not we treat this the public with it. So the important thing of the virus vaccine is the prevention of the infection. Second thing is that when majority of the 2/3 of the 70% of the peoples are vaccinated, most of the reservoir there will be no reservoir about. There is the about that is called the herd immunity. और तीसरा सबसे बड़ा है कि when most of the peoples are vaccinated, like हमारे देखें मीजल्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, थैंक्स ब्लेसिंग टू द गॉड, if there would not be the vaccine, आप देखें हर बंदा, अगर ये ना होता तो their mortality rate and the death rate would be more rise. So that is in the future, in the best thing. First vaccine was introduced after the Spanish flu. In the Spanish flu in 1918 to 1920, within 2 years, around about 50 millions of the people died. Two-thirds of the Europe was affected with Spanish flu. So that is why the scientists suggested to give a treatment. So there are so many roots of the virus. आप देखें पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं. This is attenuated virus. This depending upon the type of the vaccine, which could be effective for this. Actually vaccine जो होती है हमारे immune system को बेहतर करने के लिए, to introduce our immune system. Second जो मीजल के खिलाफ लगाई जाती थी वो पहले ज़माने में that was इंट्रोडर्मल, और इसके बाद कुछ जो majority of them are intramuscular, flu virus है या seasonal virus है या even the coronavirus is also, this disease is also vaccine will be given by this one. एक बात. दूसरी बात है कुछ vaccines ऐसी होती हैं जो seasonal के तौर पे लगाई जाती हैं, booster dose के तौर पे. How dangerous this virus is. Why we should search for the vaccine. The role of biotechnology, the department of Dr. Shugupta Naz, is very important. In my eyes, the best technology we can create by this biotechnology in your university is playing an excellent role for creating not only the awareness, but also introducing things by the biotechnology. So how dangerous this virus is, this picture is showing that how it affects our lungs, how it affects our blood vessel, how affects our immune system, how affects our other system. So that is why, no doubt, the mortality rate is around 1 to 3%, but its effects are very dangerous. Not only the patient become recovered, but there are a new terminology, that is the long hauler. जो लोग ठीक भी हो जाते हैं तो for the so many long time their lungs impossible to give their full oxygen something their systems. So that is why this, to keep you healthy, why the SOP is very important. Okay, the
coronavirus, let's think it is a mRNA virus. It is a single-stranded mRNA virus. When it enters in the body, our ACE receptors, they attach with it, and after attaching with its protein, S protein, attaching with S protein, its whole genetic material is introduced in our cell. When it enters in the cell, its structural protein and non-structural protein helps this virus to introduce its genetics material in our nucleus, in our DNA. DNA material in our. So there is a fight between the DNA of the human and the fight between the messenger RNA of the virus. So the other non-structural proteins क्या कर देते हैं? They try to defeat our immune system. Our immune system tries to get rid from this virus by introducing its humoral immunity, its cellular immunity. That is why we all say, you people, young generation, that you keep up your immune system better. If your immune systems are better, no infection can harm you. So that is why basically actually the scientist generated an idea because it is an RNA virus and the vaccine against the RNA is difficult. So क्या किया जाए? कौन सी? Because there is heterogeneity. When the virus enters from one person to the other person, वो अपने genes को change कर देता है. लेकिन luckily this virus is not changing its spike proteins. इसके हाथ जो होते हैं, इसके जो fingers होती हैं, जिससे ये पकड़ता है किसी चीज को, it is not change. आज भी एक न्यूज में पढ़ रहा था कि new virus is introduced in UK and the people are shutting down the air traffic in this one. But again, thing is that this virus is not so dangerous. It's similar to others. अगर एक वायरस खतरनाक होता है ना, वो फैलता कम है. जितना ज्यादा वायरस फैलता है वो कम डेंजरस होता है, क्योंकि अगर ज्यादा खतरनाक होता है ना तो पेशेंट मर जाता है या पेशेंट लोकलाइज हो जाते हैं. जब पेशेंट चलते फिरते रहते हैं तो इसका मतलब कम है. So its spike proteins are not. So these are the different types of immunogens used to develop a virus vaccine. बहुत सारी देखी गई कि इसके S protein को देखा गया. इसके there are 4 structural protein. One is the spike protein, one is the matrix protein, and is the annual protein, and there is the nuclear protein. इन चारों प्रोटीन के खिलाफ ऐसा किया गया कि वैक्सीन बनाई गई और ये देखा गया कि लेकिन only the one protein which is not changing. अब देखिए ये सारी जो रूबेला वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है या हेपेटाइटिस बी है, ये वायरस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स इम्यूनोजेंस, जो हमारे इम्यूनोजेंस वो एंटीजन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. तो कोरोना वायरस के खिलाफ देखा गया कि कौन से एंटीबॉडी हमारे बेहतर हो सकती है. तो वो जो पेप्टाइड्स होते हैं, तो इसके खिलाफ देयर आर सो मेनी स्टेप्स इन जनरेशन. तो वैक्सीन इज नॉट ए सिंपल थिंग कि जो एक हम कहें तो टेक years and years, बट इन थैंक्स टू द WHO CDC उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी दे अलाउड द पीपल साइंटिस्ट टू डेवलप द वैक्सीन. तो जो पहली स्टेज थी प्री क्लिनिकल स्टेज, दैट आल्सो टेक्स years and years, और वो इसके लिए एग्जम्प्ट कर की गई कि उसके अंदर जो प्री क्लिनिकल स्टेज थी वो सेल लाइन के ऊपर टेस्ट की गई. वो मैं बताता हूँ व्हाट इज अ सेल लाइन. फिर इसके बाद ये है कि अगर हम देखें इसका, तो ये फेज 1 है. इस फेज 1 में वी टेक 222 चंद लोगों को, वॉलंटियर्स को देखा जाता है. थैंकफुल टू द पीपल who first time voluntarily presented their self for this vaccine because it was dangerous, and after success they started the second phase and third phase. In Pakistan, vaccines third trial is going to be done in University of Health Sciences and in Shaukat Khanam. You all can go and get the treatment of this one. And in the third phase, different ages
different groups. Usually there are 3 types of the groups that we use. The group 18 to 65 and the group with a people, a set of people. तीसरा second group जो होता है जिनके पास कोमार्बिडिटी होता है, मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई कार्डियक डिजीज है, तो ये वो उन लोगों को ग्रुप को देखा जाता है कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो। तीसरा ग्रुप होता है जो 65 से ऊपर होते हैं। तो 3 ग्रुपों के ऊपर ये ट्रायल चल रहा है। आई will request you all people, you students, especially teachers, go to become the part of this volunteer. I myself presented volunteer for this vaccine. Vaccine is safer, it is not a dangerous thing. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्सीन जो वर्ल्ड में और पाकिस्तान में और जो की जा रही है, 2 वैक्सीन्स हैं जो सक्सेसफुल जा रही हैं। नंबर 1 वायरल वेक्टर वैक्सीन। आप लोगों को पता है, बायोटेक्नोलॉजी वाले मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं सिंपल एज ए पैथोलॉजिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ, तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले इसलिए ये बता रहा हूँ कि योर डिपार्टमेंट कैन गेट द grant and can start this work on this one. How can we develop the vaccine? And with the collaboration of Punjab University and other university, NIH, your university can develop. अब क्या होता है कि ये देखा गया कि जो वायरल वेक्टर है, ऐसा वेक्टर ढूंढा जाए जो कम पैथोजेनस हो। तो ऐसा किया गया, एडिनो वायरस को लिया गया। दिस इज द एडिनो वायरस, और ये चैम्पनीज में होता है ये एडिनो। दिस इज द एडिनो वायरस। एडिनो वायरस नजला करता है, फ्लू करता है। उसके साथ क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर से वो जीन निकाल दिए गए जो जिससे वायरस प्रोलिफेट करता था। जब वो जीन निकाल दिए गए जिससे प्रोलिफेट करता था, तो उसके साथ ये एक जो वायरस जो था वो अटैच तो होता है इन द सेल्स। द वायरस नोज हाउ टू अटैच विद द ह्यूमन सेल, बट इट कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन। अब करना क्या है, इन्होंने ऐसा किया कि इसके अंदर जो चीज काटी थी उसके साथ क्या लगा दिया, स्पाइक प्रोटीन का डीएनए लगा दिया। वो स्पाइक प्रोटीन का डीएनए भी लैब में तैयार किया गया। कैसे किया गया, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। एक बैक्टीरियोफेज को लिया गया, बैक्टीरियोफेज के अंदर प्लाज्मिड होते हैं। ये सर्कुलर प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट करता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई चीज तैयार करने के लिए। आजकल देखा टीबी आ रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब टाइफाइड आ रहा है, एंटीबायोटिक। तो ये प्लाज्मिड एक वायरस, एक बैक्टीरिया दूसरे को। तो साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट टेकन द प्लाज्मिड एंड कट इट, और जब कट कर दिया तो उसके अंदर एक सिंथेटिक डीएनए प्रोटीन बनाई गई जो स्पाइक प्रोटीन की थी। जो स्पाइक, जो वायरस की स्पाइक है, एस प्रोटीन है, वो उसको लगा दिया गया। एंड दैट्स स्कार। इसको फिर बैक्टीरिया में डाल दिया गया फिर, ताकि इसको ग्रो कर लिए और हार्वेस्ट हो गया। Then the preclinical stage started on these cells. These cells are called MRC5 cells. ये देखने के लिए कि क्या वो स्पाइक प्रोटीन्स ही बनती हैं या वायरस ही ग्रो करता है। डीएनए जो वायरस जो है वो ग्रो कर रहा है या स्पाइक प्रोटीन ही ग्रो करती है। सेकेंड टाइप की जो वायरस वैक्सीन है, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। उस मैसेंजर आरएनए को भी बायोटेक्नोलॉजी की लैब में तैयार किया गया, एंड दे वर इंजेक्टेड इन दीज सेल टू सी द प्रोलिफरेटिव एंड हैजर्ड्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑन दीज सेल्स। These are the cells that first time they were taken in 1967. अब सेल लाइन है 1 by 1 by 1। तो अब more than 40 years has been passed and this cells we cannot say ये वो फाइब्रोब्लास्ट। इसके बाद इन सेल के अंदर रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू, रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी नहीं होती। कि ये देखा गया कि अगर हम वायरस या मैसेंजर आरएनए इसके अंदर डालते हैं तो अगर ये प्रोलिफरेट करते हैं तो इसका मतलब वैक्सीन विल बी नॉट गो। तो ये देखा गया लकीली कि इसके अंदर वायरस वाज नॉट प्रोलिफरेटिंग, देयर वाज नो रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, there was no contraindicated replication of messenger RNA, but only spike protein. इसके बाद दूसरे टाइप के सेलों में देखा गया, these are the cell जिसके अंदर रेप्लिकेट ये एडिनो वायरस को रेप्लिकेट कर सकता है।
इसके अंदर भी देखा गया कि वो सेल लाइन जो थी देखी गई बिफोर स्टार्टिंग द फेज 1 ऑफ द वैक्सीन, ये देखा गया कि जो डीएनए के जो अपना वैक्सीन थी वो जो स्पाइक प्रोटीन ही इसके अंदर ग्रो की, और जो एडिनो वायरस के ग्रो किए दे वर नॉट डेंजरस, दे वर नॉट टॉक्सिक। फिर थर्ड टाइप के अंदर ये कैंसर का सेल होता है। कैंसर का सेल खुद ब खुद जनरेट कर रहा होता है, उसको किसी से जनरेशन की मदद, ये देखा गया कि क्या ऐसे ऑटोनोमिक सेल्स के साथ लॉन्ग इसकी डेथ होती ही नहीं है, इसके अपनी एंजाइम होते हैं, इसकी अपनी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती हैं जो उसको वो जाते हैं। ये 50 ईयर ओल्ड काकेशियन का सेल था। इन 3 सेल के अंदर जो है वो वैक्सीन को देखा गया। ये पेपर है, रिसर्च पेपर है। उसके बाद अब क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन इज ट्रीटेड, जिसको कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन। पाकिस्तान के अंदर कैंसिनो, साइनोफार्म एंड यूएई, एंड इन इंडिया दैट इज एस्ट्राजेनिका। दीज आर द प्रोटीन के ये क्या हुआ, एडिनोवायरस लिया गया, उसको किल करके उसके ये जीन को रिएक्टिव जीन को निकाल दिया गया। इधर से स्पाइक प्रोटीन के डीएनए को लिया गया, उस डीएनए को इसके अंदर डाला गया। दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट टेक्निक। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट टेक्निक। इस वायरस को वैक्सीन बना के इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट करने के साथ देखा गया कि there is no dangerous, this messenger RNA, it will create a copy of messenger RNA. That messenger RNA will go to our ribosome, and the ribosome will prepare the proteins, and these proteins will be introduced by our macrophages, our humoral system, our innate system to produce the antibody in cellular. देखें अब ये है, ये पेशेंट है, वैक्सीनेटेड पेशेंट है, इसके पास कोरोना वायरस आएगा अपनी स्पाइक to introduce the fact there will be already antibodies, so the patient is protected. So the virus protein is a safer protein, and it is a better protein. It can protect you from the ये उसकी ये देखें क्या बनाना क्या है इसके एंड प्रोडक्ट। देयर इज नो वायरस। इस वायरस को वायरस बनने के लिए it will need 27 more structural protein, but there is only one spike protein. This spike protein is not changing. अब ये वायरल वेक्टर वैक्सीन की आपको मैंने एक सिंथेटिक, ये नेचर से पब्लिश हुआ है। कुछ और वैक्सीन्स हैं जिसको अभी देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ प्रोटीन बाहर बनाते हैं वायरल वेक्टर। ये तो सेल हमारा अंदर बनाता है ना, तो कुछ प्रोटीन बाहर से बना लेते हैं और लैब के स्पाइक, दे विल सिंथेसाइज स्पाइक प्रोटीन, ये दिस वन, और इन स्पाइक प्रोटीन को एक उसी तरीके से इम्यून सिस्टम में देखा जाएगा उन्हीं सेलों के दरमियान, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि हमारे क्या करते हैं। तो दिस इज द एक्चुअली अनदर एक थर्ड प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड वैक्सीन फ्रॉम द होल वायरस, पूरे वायरस से, जिसके साथ एटेनुएटेड वायरस है। अभी वो कोरोना वायरस के लिए सक्सेसफुल नहीं है, और पोलियो के लिए तो है, दूसरों के लिए तो है। जैसे एक थर्ड है कि न्यूक्लिक एसिड के आरएनए, बट दिस इज ए मैसेंजर आरएनए, दिस इज ए आरएनए वायरस, एंड देयर इज heterogeneity. So this experiment was also not successful. So these are the different types of vaccine in the world. पूरी दुनिया में जो वैक्सीन दी जा रही है वो ये वैक्सीन है कि इनएक्टिवेटेड वायरस है साइनोवैक ये, और इसके साथ हमारे जो मैंने दो पाकिस्तान की और मॉडर्ना वायरस है, इसके अंदर मैसेंजर आरएनए की। नाउ व्हाई सो मेनी वैक्सीन, सवाल आप करें सर व्हाई सो मेनी वैक्सीन? दिस इज ए न्यू वायरस, द पैथोजेनेसिस इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, कि किसी के अंदर तो लंग के साथ आ रहा है, तो किसी के अंदर जीआई प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, किसी का न्यूरो प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, किसी के साथ प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक आ रहा है। सो द स्टिल इन द न्यू वायरस साइंटिस्ट एंड doctors, we are unable to understand. That's why we're trying more and more to understand that so many vaccines are going to be developed this one. ये जो WHO का एक क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से हम इवेलुएट करते हैं। इसके बाद वर्किंग टुगेदर, लेट्स मीट WHO के साथ में एक आपको नो द थिंग इज दैट, अब सवाल क्या उठता है, वैक्सीन बन गई, वैक्सीन FDA के पास चली गई, FDA ने इसको अप्रूव कर दिया। अब FDA के अप्रूव करने के बाद फेज 4 में चली गई। फेज 4 इज स्टिल नॉट ए कंफर्म्ड, स्टिल दे आर ऑब्जर्विंग इट।
तो ये क्या क्या सवाल आपके जहन में भी बच्चे उठ सकते हैं, मेरे लेक्चर में भी उठ सकते हैं। ये स्लाइड्स जो आपको बता रहा हूँ, व्हाट क्वेश्चन कैन रेज, क्या ये जो बच्चों के सेल, एबॉर्टेड सेल के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या एथिकली ठीक भी है, रिलीजियस तौर पे इसको किया भी जा सकता है? दिस वेल, आई एम नॉट ए रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम जस्ट ए डॉक्टर, मेरा किसी के साथ कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट दीज क्वेश्चंस दे माय स्टूडेंट्स आस्क मी कि क्या एथिकली ठीक भी है ये, आई विल एक्सप्लेन यू इन अदर फ्यू स्लाइड्स। दूसरा सवाल है कि अगर के अबॉर्शन के अबॉर्टिव सेल्स के अंदर ये लाइन किया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ट्रेड चल पड़े कि अबॉर्शन की, और वो बच्चों को वर्गला के या इस तरह के माओं को वर्गला के अबॉर्शंस की वो ट्रेड चल पड़े। तो वी हैव टू, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज एथिकल क्वेश्चन, टू स्टॉप इट वी शुड start in other cells, and these cells we can get by the technology Dr. Fazanda Manzoor, and once we decided to start the stem cell regeneration in your university and with collaboration, and I hope inshallah we'll start this technology in stem cell technology. In the stem cell technology we can use the adult cell, वो उस एथिक्स से जरा कम होते हैं। और थर्ड चीज है कि क्या ये जो फॉरेन बॉडी है, जो बाहर से मैसेंजर आरएनए आ रहा है, क्या हमारे डीएनए को तो डैमेज नहीं करेगा? या अगर कोई फीटल सेल है, ये तो फॉरेन बॉडी है, हम जब किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैच करते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो मैच करते हैं, जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैचिंग करते हैं। क्या इन फीटल टिश्यू के अंदर ये, क्या इसके अंदर कोई फीटल टिश्यू है जिसकी वजह से अगर ये देंगे तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा भी? सही, मैं इसका जवाब भी आपको दूंगा। एंड थर्ड इज क्या कि ये डू वैक्सीन है द फीटल टिश्यू इन देम, द फीटल टिश्यू इज देम, दे हमारे इम्यून सिस्टम को तो डैमेज नहीं। इन सब का जवाब ये है कि देयर इज नो फीटल टिश्यू, ऑल द थिंग्स वर डन एक्सपेरिमेंटली, और फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उसको प्योरीफाई किया गया, प्योरीफाई करने के बाद उसके बाद उसको उसकी वैक्सीन बनाई गई। एक बात। सेकेंड, ये फीटल टिश्यू वाला जो क्वेश्चन है, दे हैव नॉट डायरेक्ट टेकन द फीटल टिश्यू, सेल लाइन 1966 से किया गया था, फिर उसकी दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी, अब कई जनरेशन से डिवीजन हो चुके। तो आई थिंक क्वेश्चन ये है कि ये भी वो वही कह रहा है कि ये पेपर छपा है कि आइदर दिस इज सो द चर्च हैव अलाउड कि मॉडर्ना को अबाउट 30,000 people have, they have allowed that this tissue can be used for the human welfare. Why corona vaccine virus? Because it's very dangerous. What is the virus? Virus has so many proteins, but only one protein is specific. ये देखा गया कि कौन सी प्रोटीन चेंज नहीं होती, म्यूटेशन नहीं होती। आपको पता है हेपेटाइटिस सी के खिलाफ आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बनी? कि उसके हेट्रोजीनियस है, कि जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो वह चेंज कर देता है। क्या सारे वायरल वैक्सीन, जब हमारा एड्स वाला वैक्सीन HIV के साथ वैक्सीन नहीं बन सकी, इसलिए नहीं बन सकी कि वो भी RNA वायरस हेट्रोजीनियस है। तो क्या ये कोरोना वायरस RNA वायरस होने के साथ हेट्रोजीनियस तो देखा, बट लकीली द साइंटिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट लुक that their spike proteins are not changing. Even in UK में जो नया स्ट्रेन आया है, या मिंक्स में स्वीडन में नया चेंज आया है, या पाकिस्तान में 5th जनरेशन की म्यूटेशन हो रही है, तो देयर इज नो चेंज इन द S प्रोटीन। तो दैट इज ए गुड न्यूज फॉर यू, एक बात। दूसरा है कि ये वैक्सीन किन किन को देनी चाहिए। इस वक्त 16 से अबव ईयर्स को मैंने कहा 3 ग्रुप बनाए थे, 18 से 65 साल का एक ग्रुप बनाया गया था कि जिनको कोमार्बिडिटी है, एक ग्रुप बनाया गया था कि जो ओल्ड एजेस के। अभी बच्चों के अंदर ये इसको नहीं किया गया, बच्चों के अंदर वैसे भी इम्यूनिटी बेहतर ये है। और थर्ड ये है कि डोज कितनी है, कि 100 माइक्रोन के ऊपर 100 माइक्रोन एक तो डोज दी जाती है, किस तरीके से दी जाती है। तो आप ये देखें कि कोरोना वायरस प्राइमरी एफिकेसी के 65% पीपल्स पर प्रोटेक्टेड। देखें कि कितनी अच्छी वैक्सीन, ये मैसेंजर RNA की वैक्सीन है, वायरल वेक्टर। मैं आपको एक एंड वाला आप देख, एक
वो दिखाता हूँ. What were the side effects? Most commonly, I myself taken the injections. So many other my students went to the University of Health Sciences और उसके साथ के दिए. Pain, most of it developed the pain, local pain, fatigue, headache, muscle pain, joint pain, chills, कुछ लोगों को बुखार भी हो सकता है. Certain reactions have been seen. अब totally सिर्फ 3 रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर एनाफ्लेक्टॉइड रिएक्शंस हुए हैं. 2 are in UK and 1 in Alaska. वो उन 2 में से ऑलरेडी देखे ना, एक बंदा अगर किसी चीज से भी एलर्जी हो तो हिस्ट्री जिनको एलर्जी हो वैक्सीन ना लगवा. Okay, that can give the hypersensitive reactions. So Bell's palsy के ऊपर आ रहा है वैक्सीन. So 3 people developed the Bell's palsy. लेकिन ये कि long नहीं है. After treating it was recovered. So vaccine and pregnancy in children is a question. अब ये देखें, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि इनफर्टिलिटी कर रही है. नहीं, ये देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन ट्रायल पे दी गई, बिगिनिंग उनको तो एक्सक्लूड किया गया कि प्रेगनेंसी वालों को नहीं देना. बट मैं 6 to 12 लेडीज डेवलप प्रेगनेंसी, और इसलिए नहीं देना चाहता कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस. अब ये देखना है कि उसके जो बच्चे होंगे क्या वैक्सीन उनके कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं करेगी. स्टिल इट इज अ क्वेश्चन. Because certain not the safe pregnancy vaccines are also contraindicated because of a theoretical risk of the fetal transmission, including measles, mumps. ये देखा गया कि कोरोना का जो वायरस है माँ के पेट के जरिए से बच्चों को 2% लोगों को हो सकता है. That is why देखा गया कि वैक्सीन नहीं दी जा सकती. कुछ को तो बिल्कुल, कुछ के लिए सेफ है. मसलन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सेफ है, माओ को दी जा सकती है, प्रेगनेंसी वालों को दी जा सकती है. इसके बाद टेटनस वालों को दी जा सकती है. ये इसके बाद डिप्थीरिया वाली वैक्सीन भी दी जा सकती है, मेनिंगोकोकल वाली स्ट्रेन. तो ये क्या करता है, जब वैक्सीन आती है, इंजेक्शन होती है, तो हमारे राइबोसोम्स के पास जाती है. राइबोसोम्स जो हैं उसके एंटीजन बनाती हैं. वो एंटीजन वो हमारे प्रोटीन बनते हैं, हमारे माइक्रोफेज उसको लेते हैं, हमारे माइक्रोफेज उसके टी सेल को देते हैं और 20 TH1 और TFP को देते हैं, और हमारी इम्यूनिटी दरकार होती है 95%. यस, गुड. तो दिस इज क्या होता है, 2 डोजेज होती है, एक डोज नहीं होती. पहली डोज होती है, इसके बाद एक 21 दिन के बाद दी जाती है, दूसरी 28 दिन के बाद दी जाती है. और उसके बाद जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन के कम से कम 14 दिन के बाद कंसीडर की जाती है. तो इन मॉडर्ना इट टेक्स 44 days एंड इन फाइजर इट टेक्स 35 days प्रोटेक्शन. इसी दौरान में आपने वो करना है, SOPs का ख्याल रखना है. तो दिस इज द डोज शेड्यूल ऑफ दिस वन. तो व्हेन यू आर वैक्सीनेटेड, गुड न्यूज देयर इज. अब मैं आपको देखूं कि ये 3 वैक्सीन थी जो पाकिस्तान, ये एस्ट्राजेनेका है, ये 23,000 लोगों पे देखी गई. मॉडर्ना 30,000 लोगों पे देखा गया, ये 43,000 पे देखा गया. ये प्रोटेक्शन रेट है ऑलमोस्ट इजीली ब्यूटीफुल. एक सवाल ये है कि क्या जिनको वैक्सीन होगी उनको, पहला सवाल, प्राइमरी सवाल, उनको कोरोना नहीं होगा, पहला सवाल. दूसरा सवाल है कि अगर कोरोना हो जाए तो उनके अंदर डेथ नहीं होगी. यस, 0% डेथ. तो दैट इज वाई उनके अंदर सीरियस लोग नहीं होते. दैट इज वाई द वैक्सीन इज 100% प्रोटेक्टिव. आपने परेशान नहीं होना. मैं आपको एक थोड़ा सा आप देखिए, 2 वैक्सीन जो मॉडर्ना और उसके अंदर आ रही है कि इसके साथ दोनों मैसेंजर RNA वैक्सीन है और उसके अंदर लिपिड पार्टिकल्स के साथ, नैनो पार्टिकल के साथ. वो नैनो पार्टिकल्स नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं, वो व्हेन दे विल इंजेक्टेड they will do they will be, और इतनी थोड़ी मिकदार में होते हैं तो इमीडिएटली दे आर क्लियर्ड फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम. इसके बाद देखें कि दोनों एंटीजन क्या है, स्पाइक प्रोटीन. कि एलर्जी रिएक्शंस, मॉडर्ना ने अभी तक रिएक्शन नहीं आया, और जबकि फाइजर में सिर्फ 3 लोगों को एनाफ्लेक्टॉइड रिएक्शन आया है. एफिकेसी ऑलमोस्ट मोर देन 95%. स्टोरेज इज प्रॉब्लम
कि ये आपका हमारा प्रॉब्लम नहीं, हमारी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, इसके लिए इंसिस्ट है। इसके बाद डोज जो है 100 माइक्रोन डोज और इसमें 30 माइक्रोन बैंड, ये 2.2 मिलियन वायरस से थोड़ा है कि किसी भी डीएनए को चेंज कर कम से कम मोर देन 2.2 मिलियन वायरसेस हों तो वो जाके आपके डीएनए को चेंज करेगा। सो दिस इज थैंक यू वेरी मच द मैसेज कि ये कोरोना वायरस है, ये प्रोटेक्टिव in Pakistan. What should we know? We should take all the SOPs from the day one of stay at home, clean your hand, cover your nose and mouth, avoid touching, hugging, shaking hands, maintain the distance around about 1 meter to 6 feet, and stay away from the crowds. शादियां हैं, मॉल्स हैं, कोई बात नहीं, इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी शॉपिंग ये है, सेव यू, आप अपनी जिंदगी को बचा लें तो सबसे बड़ी सेव है। And then use this mask, is very beautiful mask, and you should have 3 to 4 masks. Do not use a single mask, do not touch it. And these are the resources that thank you very much. And now if you have any question, if you have any question, thank you, sir, for your time. And yes, sir, we have questions over to you. Sir, our first question is this vaccine safe for pregnant women? Yeah, that I explained that currently it has seen that they have excluded the pregnant woman. I showed you the last slide. Certain vaccines are not dangerous, okay, but certain, this is still a questionable. I will not advise the pregnant lady to get the vaccine, but I will give you the answer. Allah Taala ने pregnant lady को पूरी दुनिया में एक भी death नहीं हुई. One thing, why? Because the nature has given the natural protection. वो माँ बनने वाली है, उसने इस मुआशरे को एक नया इंसान देना है. That is why the nature has given the protection. In my practice in Pakistan, not a single pregnant lady died or went in a serious COVID during. एक बात, दूसरी बात है कि जितने भी प्रेग्नेंट वोमेन थी उनके सिजेरियन सेक्शन किए गए, नॉर्मल डिलीवरी के, नॉट ए सिंगल वोमेन डेवलप्ड ए सीरियस और ए कोविड, और जिनको कोरोना हुआ भी सही तो मोस्टली दे वर. सो दिस गॉड हैज नेचुरली प्रोटेक्टिव दिस वैक्सीन. आई विल नॉट रिकमेंड इट. लेकिन ये देखा गया कि वैक्सीन के बाद जिनको वो हुई, अपना प्रेगनेंसी हुई, तो उसके अंदर अबॉर्शन नहीं हुई. स्टिल वी आर अवेटिंग कि उनके बच्चों को ट्रांसमिशन तो नहीं होती या. So this is actually the problem. So I will not recommend the pregnant lady to get the vaccine. Thank you, sir. Sir, my next question is there any ethical or religious point of view? Is it ethically safe? Yes. Another question. Thank you very much, beta. As a vaccine is basically, देखें, one thing is you are not using for trade. If you are using for the trading, it is not ethical. One thing is that abortion is illegal in Islam or anything is until and this is some medical indication or something. So the trend of using the newly aborted cell is non-ethical. लेकिन ये तो सेल लाइन है ना, आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने बहुत सारे सेल हैं जैसे जिसको हम एडिनो वायरस से लिया गया सेल, तो ये जो सेल थे, आई थिंक एज ए डॉक्टर यूजिंग दिस प्री क्लिनिकल थिंग इज नॉट अनएथिकल. एक बात. दूसरी बात है द थिंग्स, इफ अगर आप कहें कि सर अगर इसके अंदर सेल हैं, सेल नहीं होते, उनको प्योरीफाई कर लिया जाता है. ये एक्सपेरिमेंट किया गया, वो इंसान से बाहर किया गया
जो वैक्सीन आपको मिल गई है, इट इज प्योरिफाइड, इसके अंदर 1% भी ह्यूमन सेल नहीं आया। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेब्री आ भी जाती है तो हमारा मैक्रोफेज सिस्टम जो है उसको इंगल्फ करके क्लियर कर देगा। तो माई question, my answer in regarding this question is that this virus, this vaccine do not contain any fetal cell. Thank you, sir, for your answer. Sir, my last question is, sir, will it modify our DNA? Will it cause any changes in our DNA? Okay, thank you very much. Yes, the messenger RNA, the RNA virus always have certain heterogeneity. This virus is changing. वो नहीं है जो वुहान में हुआ था, अब इसकी कई जनरेशन चेंज हो चुकी हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था इसकी 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एक है स्पाइक प्रोटीन, एक उसका एनवेलप प्रोटीन, एक उसका मैट्रिक्स प्रोटीन और इसका न्यूक्लिक एसिड। सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन है वो न्यूक्लिक एसिड की, और म्यूटेशन नहीं हो रही स्पाइक प्रोटीन की। जो हमारी वैक्सीन है वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। Thank you so much, sir, for joining us and for your time. I hope this information will benefit more the ones who have joined us. Thank you so much, sir. Stay safe and thank you. Thank you. Also, thank you very much, Naila, Shahjahan, Irfan, Madam Bushra, and Dr. Farhanda. I am always available when you are. Thank you so much, mere bachcho. Thank you, sir. Thank you so much. Stay safe.